Hello viewers, welcome to the Learners Nursing classes. This is mock test part 3 and questions are taken from all the previous entrance exams. All the questions are important and questions are image based question. There will be a picture, you have to assess the picture and then give the right answer. So let us start. See, needle stick injury may cause infection in all of the following except like क्रॉस कंटेमिनेशन या ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन जो होता है वो कौन कौन सी मतलब बीमारियों का नीडल स्टिक इंजरी से हो सकता है कि अगर आपको नीडल स्टिक इंजरी हो गई है तो कौन कौन सी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकती है। HIV इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस एंड मलेरिया। सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? इसमें पूछा गया निडल स्टिक इंजरी में कॉज इन्फेक्शन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कौन सा नहीं है। हियर द आंसर इज मलेरिया। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट इन द इमेज। सी देर इज एन इंस्ट्रूमेंट गिवन। इसमें क्या क्या है देखिए, एक हैंडल है, एक यहाँ पे आई पीस होता है, ये हेड होता है और ये ईयर स्पेक्यूलम है। सो व्हाट इज दिस इंस्ट्रूमेंट? ऑटोस्कोप, टोनोमीटर, ऑप्थेल्मोस्कोप, नन। See, this is a otoscope. This is a solution used in the hospital. After how many days you will change this solution? See, this is a solution. इसके अंदर instruments जो हैं वो submerged हैं, तो what is the lotion which is used here or the solution which is used here? This is used for the disinfection or sterilization of the instrument and the method is called as chemical sterilization. So let us see the options. Now how many days? 7 days, 28 days, 14 days, 21 days. See here the right answer is 14 days and 14 days जो होता है वो ग्लूटाराल्डिहाइड होता है, साइडेक्स भी बोलते हैं जिसको। ग्लूटाराल्डिहाइड हैज गॉट अ लाइफ साइकिल शेल्फ लाइफ ऑफ 14 डेज के 14 डेज में जब आपने इसको ट्रे में डाल दिया है एक्टिवेटर के साथ तो उसके बाद इंस्ट्रूमेंट 14 दिन तक आप उसमें रख सकते हो। 14 दिन के बाद यू हैव टू डिस्कार्ड द सोल्यूशन। Following is the picture of a sterile sponge used in surgery. It has a blue thread. What is the purpose of the blue thread? See, there is a blue thread. See, there is a blue thread. इसका क्या पर्पस होता है? Blue line is a radio opaque line. Blue color is easily visible when soiled in the blood and no specific purpose. Design of the gauze piece. See here the answer is blue line is a radio opaque line. Blue line जो होती है वो radio opaque होती है। तो मान लो कोई abdominal swab या gauze piece abdominal cavity या किसी भी cavity में गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है, हमारा काउंट सर्जरी के एंड में करेक्ट नहीं हुआ है, that time we can take a check x-ray and we can find out whether the gauze is inside और gauze बाहर ही कहीं गिर गया है और किसी के पैर से बाहर चला गया है। whenever there is a count, there are so many confusion if the gauze piece is not found, so count has to be exact. That is why these radio opaque line gauze piece and abdominal swabs are made, so that the patient safety is the first purpose. A primea gravida with O negative blood group delivered a baby with O positive blood group. While DCT is negative, what should be done next? See, repeat DCT. 300 micrograms of anti-D to the mother, 150 micrograms of anti-D to the mother, or no need to give any anti-D to the mother. देखिए, whenever the mother's blood group is negative and the baby's blood group is positive, the 300 microgram of anti-D should be given to the mother. See, the answer is 300 micrograms of anti-D. Identify milky white solution which is used in the operation theatre for sedation and anesthesia based on the following image. Just look at the image. This is a milky preparation which is used in operation theatre for sedation and anesthesia. बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो what is it? Propofol, midazolam, ketamine, rocuronium. See, I will tell you. Propofol is the induction agent. Midazolam is also the induction agent, ketamine is also the induction agent, and rocuronium is a paralyzing agent. Now all of these comes in the water transparent form, water solution type form, and the propofol comes in the milky preparation. It has got egg, lecithin and soybean oil there, and it is milky form. So answer is propofol. Now identify the use of the following machine. Pneumatic compression device. It is used in, this is pneumatic compression device. And now let us see the option. देखिए, deep vein thrombosis, pulmonary embolism, varicose vein and leg pain. Here the answer will be deep vein thrombosis, DVT.
Now, the shown below instrument is used in which surgery? देखिए ये ना क्लासिकली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर सर्जरी के लिए बने होते हैं. सो दिस इज अ पर्टिकुलर, दिस इज जोल्स रिट्रैक्टर. नाउ द पर्पस ऑफ दिस इज लाइक फॉर व्हाट आर द ऑप्शंस? थायरॉयडेक्टमी, abdominal surgery, thoracotomy, cesarean section. See, Joule's retractor is the classical instrument of thyroidectomy. Identify the procedure done in the image. In this image, there is a tube which is going inside the nose, and the tape is fixed, and this is hanging down. Now, what is this procedure? It is a nasogastric insertion. It is a angio-tube insertion. It is a एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्शन और इट इज़ नन ऑफ द अबव. सी, इसमें ऑप्शंस में अगर आप देखो तो नेज़ो गैस्ट्रिक नाक से होके जा रही है और गैस्ट्रम में, और नेज़ो जेजुनल ट्यूब होती है जो नाक से जाती है और जेजुनम तक जाती है, एंड एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है वो नाक या मुंह से जाएगी और ट्रेकिया में जाएगी और ना बाबा. तो आंसर इज नेज़ो गैस्ट्रिक इंसर्शन. Identify the catheter in the following image. See, there is a catheter which is going inside. It is peripherally inserted, and so what can be the name of the catheter? Central venous line, intra-arterial line, peripherally inserted central line, none of the above. Answer is peripherally inserted central line. आइडेंटिफाई डिजीज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इमेज. देखिए ये एक ऐसे लग रहा है जैसे कुछ इम्प्लांट सा डालना है, ऐसे नेट सा लग रहा है. तो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज इट? इट इज़ कॉल्ड एज मैश. नाउ मैश इज इंसर्टेड इन व्हाट ऑल प्रोसीजर्स वी शुड नो दैट मैश प्लास्टी जो होती है वो कहाँ कहाँ की जाती है. नाउ इनग्वाइनल हर्निया, थोरैकोटमी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, नन. सी द आंसर इज इनग्वाइनल हर्निया में हम मैश हर्नियोप्लास्टी करते हैं. फाइंड आउट द प्रॉब्लम इन द फॉलोइंग इमेज. देखिए देर इज़ एन इमेज वेयर देर इज़ अ सेगमेंट विच इज, यहाँ पे ये जो एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो प्रोट्रूड कर रहा है. तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? यू हैव टू सी द इमेज एंड लुक एट द ऑप्शन. इनग्वाइनल हर्निया, इंसीजनल हर्निया, स्क्रॉटल हर्निया, नन ऑफ द अबव. सी ये आई शो द इमेज. ये ना दिस इज द इनग्वाइनल कैनाल. सो दिस इज द इनग्वाइनल हर्निया. Identify the following machine. See, this is the machine we have to identify. Look at this. This is some circular cylindrical pattern horizontal machine. Autoclave machine, ultrasonic instrument washer, high risk medication cupboard, none of the above. See, here it is the autoclave machine. Look at the image and tell which of the following is incorrect combination. Now looking at this image, let us see the options. Green color denotes the heart rate. See, green color denotes the heart rate. Now light blue color denotes the SpO2. The light blue color denotes the SpO2, right. Now yellow color denotes the respiration. The yellow color denotes the respiration. Now coming to the white number denotes the MAP. What is MAP? MAP is the mean arterial pressure. So here the blood pressure is in the white, but the mean arterial pressure is not in the white. So what is wrong in this option? Look at the image and tell which of the following is incorrect combination. So the mean arterial denotes the white number denotes the mean arterial pressure is the wrong. Identify the following instrument or the equipment used in hyperbilirubinemia monitoring based on the image. So this is the monitor. Now what is it called? It is called tonometer. Sorry, what is called? Phototherapy irradiance meter, tonometer, conversion meter, none. See, it is called as phototherapy irradiance meter. A nurse is posted in emergency department and the patient comes with a seizure. The priority management of seizure patient is airway management by sideline position and head turn, controlling seizures with medication, circulation management with IV fluid, and none of above. जब भी कोई seizure patient आता है तो we are supposed to give the sideline position on a flat surface to the patient, turning the head on the one side so that the chances of aspirations are minimum and the airway is patent. तो answer is airway management by sideline position and head turn. Identify the following procedure that nurse is doing in the following image. See, there is in this image there is a milky preparation which is kept here, which is being mixed with some injections, and there is also one more packet which has got transparent preparation which is kept. Now what is it? TPN, total parenteral nutrition, dialysis, hydration, lavage solution. Here the nurse is preparing the total parenteral nutrition.
Identify the procedure done below by the healthcare professional in the image below. See what is the procedure being done. ये पेशेंट की स्पाइन लग रही है और ये जो है ये पेशेंट को एक जो नीडल जो है पंचर की जा रही है और ऊपर देखो सील भी किया हुआ है इसको. नाउ आफ्टर सीइंग दिस इमेज दिस कैन बी cerebrospinal fluid aspiration, pleural fluid, cerebral fluid or peritoneal fluid. So as per the image, when the patient's body is vertical, it looks like it is a cerebrospinal fluid. So answer is cerebrospinal fluid. Marked area shown in the following images. इस image में इस area को scientifically क्या कहते हैं? Axillary region, cubital region, thoracic region, none of above. So this region is called as the cubital region. Identify the blade which is being shown in the picture. So this is 11 number, 23 number, 21 number, 22 number. This blade is also called as a stab knife or a stab incision blade, which is called 11 number blade. Which of the following is an early warning sign for the cancer of lung? Dysphagia, persistent cough, unusual bleeding, aphasia. See, it is the early warning sign of the cancer lung is persistent cough. Diabetes mellitus is usually identified by people by albuminuria, glycosuria, loss of appetite and hematuria. See here the answer is glycosuria. In a patient with fracture of bone, which of the most serious complication can occur? Now, what are the complication? Air embolism, infection, bleeding, fat embolism. Here the answer is fat embolism. Most common site of cancer among female is, see, vagina, uterine cervix, uterine body, fallopian tube. See, the most vulnerable site for the cancer for a female is uterine cervix. Step ladder fever, sore throat, abdominal pain, cough are the features of polio, meningitis, typhoid fever, myocardial infarction. See, इसमें क्या होता है ना, जो step ladder fever होता है, that is classically used, मतलब this step ladder fever is called typhoid fever. उसी के लिए ये नाम लिया गया है. Now, enteric fever is also known as, see, enteric fever is dengue fever, typhoid fever, pertussis, measles. It is typhoid fever. Trachoma is an infectious disease of ear, conjunctiva and cornea, nose and pharynx or the cervix. See, trachoma is the disease of conjunctiva and the cornea. Characteristics features of tetanus is skin rashes, lockjaw, fever, anorexia. सी टेटनस में क्या होता है ना, जॉ एकदम लॉक हो जाता है, अकड़ जाता है, तो आंसर इज लॉक जॉ. ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन, इम्यूनिटी पावर इंक्रीजेस, इम्यूनिटी पावर डिक्रीजेस, इम्यूनिटी रिफ्रेन्स कांस्टेंट, इम्यूनिटी रिमेन्स कांस्टेंट और नन ऑफ दीज. आंसर इज इम्यूनिटी पावर डिक्रीजेस. फीवर, वूपिंग कफ, बॉडी एक आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ, सी वूपिंग कफ जो वर्ड यूज़ किया गया है ना, ये एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए किया गया है ना. ऑप्शंस हैं डिप्थीरिया, परट्यूसस, मीजल्स, मम्स. यहाँ पे आंसर है परट्यूसस. थैंक यू व्यूअर्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.